our channel AutoGod. The Great 8, BMW flagship of 90s. At the time, an innovator of exceptional design, sporting luxurious and elegant, combined with modern technical features. The 8 Series stands for BMW Coupe. The BMW 8 Series is an innovative, luxurious liner that has influenced BMWs for generations. This car is second generation and it had to be special like the OG 8. Let me tell you, if the 7 Series is luxury cruise ship, then 8 Series is the powerboat. It offers same level of luxury in far more cooler packages. 8 Coupe has been Germany's one of the most successful 12-cylinder engine. Let us see this car and see what kind of luxury this car oozes out. This car is a combination of innovation and elegance, sporting amazing features. The moment we see this car, the first thing we notice is such low roof line and the muscular shoulders this car has and these wheelbase. Oh, this is a long wheelbase car, guys, at the front side. And the first most important thing we see on the front side is the iconic BMW logo. And just below this BMW logo, we see the signature kidney grille of the BMW. And this is not just normal kidney grill. This is an active kidney grill. ये आपकी यहाँ पे open और close भी होती है. The way you are driving the car, because to give you more feel, more power to the car, it helps in that. Then when we come around, we see is all laser headlamps. Complete आपकी laser headlamps आती है, where you have cornering lamps also. What also we have in these lights are the anti-dazzle features in these lights. It gives the release lights being a complete crystal clear. Then what else extra we have? If we see on the front side, we see the rain sensing wipers over here. And then what else extra we see? यहाँ पे आपके पास front camera है and front parking sensors है. And if we look around, then air suction के लिए air inductors यहाँ पे आते हैं आपके पास. Air inductors के पास you have an amazingly chrome tip and it gives a beautiful look to the car. Let's have a look at the side, and the first thing we notice at the size is this massive size of the alloy wheel. These are 18-inch alloy wheels. You also get options to upgrade to 19 and 20. But this is a very decent size, and these are run flat tires, BMW's patent technology. So let's talk about dimensions about this car. I would like to tell you 5.1 meter is the length of this car, 1.4 meter is the height of the car, 1.9 मीटर इज द विड्थ ऑफ द कार. सो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके अंदर आपका मेमोरी फंक्शन आता है, इसके अंदर आपका पार्किंग असिस्ट आता है, आपका पार्क के साथ ही टर्न अराउंड होता है. देन इसके अंदर आपका एंटी डाजल फीचर आता है and these are heated electrical ORVM. Then let me show you this beautiful aerodynamic structure air inductors. यहाँ से आपके एयर इंडक्टर्स की वजह से एयर निकलती है. इस एरोडायनेमिक शेप की वजह से दिस कार इज सो डैम क्विक. You know what? This car clocks 0 to 100 in 5.48 seconds, guys. That's amazingly fast. So at the back, what we see is, the first thing we see is the iconic BMW logo. इस BMW लोगो के साथ आपके पास यहाँ पे 840i की बैजिंग आती है. Then you have LED lights and these are dynamic braking lights over here. Then आप नीचे देखेंगे यहाँ पर तो बम्पर, you have यहाँ पे आपके पास बम्पर पार्किंग सेंसर्स आते हैं and these bumpers are aerodynamic bumper. यहाँ पे आपके पास aerodynamic पूरा शेप दे रखा है इसका. Then इसके हम नीचे देखेंगे तो we have dual exhaust pipes in complete chrome finish. And in this car, the chrome looks superb. क्योंकि it's a very minimalistic taste, this chrome which is being used, and this thing looks very nice. Let's have a look inside the boot. And what we see inside is the 420 liter of the amazing boot space this car has. Let's have a look inside the hood. This car is 3000 cc. It's a 3 liter engine, twin power turbocharged engine, and it's a straight 6-cylinder engine. This car generates 340 horsepower and it's 500 Newton meter torque. It clocks 0 to 100 in 5.48 seconds and 0 to 160 in 12.5 seconds. So now we are at the back seat, and the moment we are at the back seat, what we see is
the gorgeous looking car interiors. I really love these interiors. And these have integrated headrest on these seats. I think this is dedicated 4-seater car. You don't have much space for 5-seater क्योंकि यहाँ पर आपका रेस्ट काफ़ी ऊपर आपका दे रखा है, तो nobody can put legs over है, इसके ऊपर से आपको बैठना पड़ेगा. But for a 4-seater, it has ample of room. Thigh support is way too nice. बहुत अच्छा thigh support है इसका. हाइट थोड़ा सा पीछे कम है, हम 6 फीट, थोड़ा मार्जिनली इसका हेड रे और ऊपर हो सकता था, बट ओवरऑल एज अ रूम एम्पियंस इसमें काफ़ी एम्पल रूम है, काफ़ी रूमी फील होता है. इट्स ह्यूज, इट्स वेरी वाइड एंड काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल मेरे को पीछे फील हो रहा है. देन ओवर हियर इफ वी सी, आई हैव डेडिकेटेड, यहाँ पे आपके पास फैंस हैं, आपके पास यहाँ पे आपके पास ब्लोअर से कंट्रोल करने के लिए आपके पास यहाँ पे आपके पास फैन की स्पीड का ऑप्शन भी है. देन टू कंट्रोल टेम्परेचर यू हैव कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर आल्सो ओवर हियर. देन यू हैव 2 टाइप सी पोर्ट्स ओवर हियर. आजकल सब सारी कार्स में टाइप सी आता है, तो टाइप सी ऑलरेडी पहले से इस कार के अंदर आता है, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग विच BMW हैज़ डन. देन हम इसके साइड में देखेंगे द very nice armrest, the amazing, very nice armrest over here. Then with armrest we have amazing 2 cup holder features. Then ये तो आपके standard features हो ही गए कार के अंदर. Then few interesting more things I'll show you in the car, like at the door. यहाँ से हमारे पास सारी फंक्शनैलिटीज आ जाती है. यहाँ पे आपके पास पावर विंडो का ऑप्शंस है. देन वी हैव ब्लाइंड ऑप्शंस आल्सो ओवर हियर, एंड यहीं से मैं पीछे का ब्लाइंड भी कंट्रोल कर सकता हूँ, एंड सनरूफ का बटन भी मैं यहीं से कंट्रोल कर सकता हूँ. देन विथ रिस्पेक्ट टू दैट, अगर मैं यहाँ का पूरा लुक देखूं, इट्स ब्यूटीफुल लुक. यहाँ पे देखेंगे पूरी कार के अंदर एक तो कंप्लीट कार हैज बीन डन लेदर से, डुअल टोन में आपका इंटीरियर आता है, तो पूरा यहाँ पे हैंड स्टिच लेदर, आपका पूरा हैंड स्टिच थ्रेड के साथ आपका पूरा इधर फिनिश दे रखा है. गिव्स सो प्रीमियम लुक टू दिस कार. It's just die hard for. And the moment we open the door, what we observe are the frameless windows. These frameless windows gives a good look to the car. And this is the driver's side window door. And what all things you have is, you have power windows over here. Then you have unlock and lock button over here. Then you have 3 memory functions over here to set with your seats. And these memory functions also get set with the steering control as well. Then with respect to that, you have electrically adjustable seats over here, which are height adjustable, recline, decline, and they have extra lumbar support to it. Finally to the best place of the car is the driving seat. Yeah, we are at the driving seat. The first thing we notice when we sit over here is the M Sport steering wheel. Completely leather wrapped with the pedal shifts and cruise control system, everything available over here. आपका mic का button, आपका toggle switches का button, everything comes over on this place only. Then आप यहाँ पे अंदर देखेंगे, you find digital console over there. Then in this digital console you have all the features, navigation integrated into it. The second thing we see is the complete leather dashboard. Each and everything on this dashboard is leather wrapped with such nice beautiful threads. It gives a very nice feeling. मेरे हाथ को इतना देखते हो, टच कर रहा हूँ, इतना अच्छा फील दे रहा है मुझे. It looks very very nice. Let's come to infotainment. Infotainment में आपका सबसे पहले देखेंगे it's a 12-inch screen. Then इस 12-inch screen के साथ आपको इसके अंदर wireless Apple CarPlay आता है. Then आपका इसके अंदर wireless Android CarPlay आता है. With wireless Apple CarPlay and Android CarPlay इसमें आपका navigation system भी आता है. Then with navigation system you have FM, Bluetooth and everything available over there. Then with respect to that, when we come down from the infotainment system, we see is the AC with the chrome accent. आप इधर देखेंगे you have chrome accents over here and typical BMW style over here, completely BMW pattern over here. But one thing which is very crystallized to my eyes is this new knob. This knob is a crystal knob. आपका iDrive के अंदर, on your gearbox, everywhere, all these things are of crystal. If you can see this gear knob, this looks damn beautiful. With the iDrive, it looks really nice. It keeps glittering and gives you shine. So the moment we open this, we see and inside is 2 cup holders. 2 cup holders के साथ आपके पास यहाँ पे wireless charging का option भी आता है. Wireless charging के option के साथ आपके पास यहाँ पे USB charging option भी available है. Then with the gear knob, what all extra features over here we have is, you have engine start stop button again in crystal. Then you have ESP button,
360 degree camera button, reverse parking assistant button. Then you also with this you have modes, drive modes. This car has 4 drive modes. तो उनका 4 drive modes का आपके पास बटन है. Then you have auto hold and electric parking brake button over here. Then you have 4 driving modes in the car: sports, comfort, eco pro, adaptive. with उसके पीछे आपके पास इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक आ जाती है. ऑटो होल्ड का फीचर इस कार के अंदर आपके पास आ जाता है. देन इफ वी गो बैक, यहाँ पे हमारे पास वी हैव आर्म रेस्ट. इफ यू ओपन द आर्म रेस्ट ओवर हियर, वी हैव स्टोरेज स्पेस ओवर हियर. विद द स्टोरेज स्पेस यू हैव 12 वोल्ट सॉकेट चार्जर एंड आपके पास टाइप सी चार्जर आ जाता है इसके अंदर आपके पास. देन what we also see in the car is IRVM mirror. This is electrically IRVM rear view mirror आपका completely electrical है. Then इसके when we see back behind of this is we have sunroof button over here. One touch sunroof up, your sunroof gets open over this. And with one touch your sunroof gets closed with this. चलिए नाउ अब मैं आपको कार के सारी डिटेल्स बताती हूँ. लेट्स हैव अ ड्राइव करके देखते हैं एंड आई विल गिव यू द रियल फीडबैक अबाउट दिस कार. एंड द मोमेंट आई हैव जस्ट स्टार्टेड द कार, द फर्स्ट थिंग ओफ इज द एक्सेलरेशन. वाओ, आई जस्ट लव इट. बैठता हूँ, द फर्स्ट थिंग आई रियली लाइक इज द पिकअप. इतना अमेजिंग पिकअप है इस कार का. द मूव मैं एक्सीलरेटर पैडल दबाता हूँ एंड इंस्टेंटली मुझे रिस्पॉन्स मिलता है, इंस्टेंटली थ्रॉटल का रिस्पॉन्स आता है. एंड द बेस्ट पार्ट इज जो इसकी साउंड आती है आपके पास, इट्स वेरी नाइस. अभी आई एम ड्राइविंग दिस कार फॉर बहुत टाइम से इस कार को मैं ड्राइव कर रहा हूँ. एंड व्हाट आई रियली लाइक द वे दिस कार हैज बीन क्रूजिंग. इसकी क्रूजिंग में स्पीड इतनी अच्छी फिनोमिनल है कि आपको पता ही नहीं चलता. ड्राइव्स आप बहुत लॉन्ग करो, इट्स बिकम्स वेरी इजी. आई वेंट टू पॉटहोल्स आल्सो. पॉटहोल्स में थोड़ा सा डिफिकल्टी इस कार ने फेस किया, बट डिस्पाइट देम दिस कार BMW इज अ सक्सेस. ग्रेट कार. एंड सबसे अच्छी चीज मुझे जो इसकी लगी है इस कार का, हैंडलिंग. द वे इसका स्टेयरिंग इसका हैंडल कर रहा है, सारी चीजें इसकी हैंडल कर रही हैं. द वे इसका गियर बॉक्स हैंडल कर रहा है, मुझे एक सेकंड के लिए भी गियर बॉक्स के अंदर लैग फील नहीं हुआ. सारे के सारे गियर बॉक्स अप एंड डाउन इतने इजीली, इतनी स्मूथली ट्रांजिशन होता कि पता ही नहीं चल रहा था कि कब कब में गियर चेंज हुआ है. सो व्हाट आई रियली लाइक इज दिस कार एंड द ड्राइव. एंड स्पेशली जब मैं इसको स्पोर्ट्स प्रो मोड में डालता हूँ, तब जो मुझे इंस्टेंटली जो इसमें आपको रिस्पॉन्स मिलता है थ्रॉटल का, क्विक, extremely quick. The performance wise this car is massive. The torque is 500 newton meter torque. boss अच्छा तो होना ही चाहिए. A must buy for everyone, all the BMW fans, all the 8 series fan. This car is just for you. Guys, if you are liking our videos, please subscribe to our channel, like our videos and comment में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है. एंड डू शेयर कौन सी नेक्स्ट वीडियो की आपके लिए कार का हम रिव्यू लेके आए. एंड आई विल मेक श्योर दैट आप कमेंट में डालेंगे एंड हम उसको कंप्लीट करेंगे.